let's begin. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Saranaagamanam sampunnam. So today is Buddha Purnima. Able to hear my voice? आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So today is the Buddha Purnima. So there's something which is a very important information that we need to know, that why we are doing Uposatta. So I will explain this both in English and Hindi. So Uposatta is from two words, Upa and Vasatta becomes Uposatta. Upa means near, Vasa is to stay. So it's all about staying with yourself and seeing what is happening in the mind. This activity has to be done all the time, but today we are doing like an Arhat would do. That is, a fully liberated one would do. तो आज बुद्ध पूर्णिमा है. ये जानने की ज़रूरत है कि हम ये उपोसत्ता क्यों कर रहे हैं. उपा का मतलब होता है कि नज़दीकी और वसत रहना. तो अपने नज़दीक में रहना है, मतलब अपने मन में क्या हो रहा है पूरा दिन उसको देखना है. So now when we do this, we just now recited 3 times Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Then we also did Buddham Saranam and Dhammam Saranam and Sangham Saranam. It would look as though we are doing like a ritual, but today we need to know much more than a ritual. So Namo is from two words, Na Mama. This is not mine. Okay, that's about surrendering the ego or not having ego. Thus is that Bhagava. Now we need to know what is Bhagava. Bha is to have a circling, bhava, becoming. Ga is going around. Va is to cut it. So when we say Bhagava, one who has cut the circling, that is samsara. Bhagavato Arahato. Arhat is one. Ari is enemies. Han is to cut. So Raga Dvesha Moha. Raga as in desire. Dvesha as in aversion and anger. Moha is delusion. Samma is one who knows. Sambuddha. That is, Samma is equal also. And
Samma is straight or proper. Sambuddha, Sam as in full. Buddha is one who knows. So this is from two words again. Buddh is to know, and he knows the Four Noble Truths. There is suffering, there is cause for suffering, there is way to get out of suffering, and how did we, or what steps did he took to get out of suffering. What is suffering? It is the birth and death cycle. That's a suffering. No other thing is more suffering than birth and death. Once we are born, it's only a matter of time. The person dies. So we need to understand why we are following this not as a ritual. Okay. So now let's get into the Hindi side of it. हमने नमन किया, मतलब मेरा नहीं है करके किया. तस्स उनका, भगवतो जिन्होंने संसार को कैसे तोड़ना है वो जाना है. अरहतो, अरि का मतलब होता है जो दुश्मनी है, वैरत्व है, और वैरत्व 3 है, राग द्वेष मोह. इसको उन्होंने काटा है, और जो ऐसे सही तरह से काटा है और जाना है वो संबुद्ध होता है. और बुद्ध का मतलब है कि 4 आर्य सत्य या सत्य, कि दुख है, दुख क्यों है, दुख का निवारण, और जो हमने स्टेप्स लिया था, कदम लिया था, उसको जानना है. और दुख का मतलब ये होता है कि जनन और मरण. So for today, we have to take 8 precepts which you have been taking, but it is better to know what these precepts are, and then we will go into the Uposatta Sutta. It is in Anguttara Nikaya 3.70, so we will do that. So the first precept, Panati Pata Veramani Sikkapadam Samadhiyami. You know it already, but it is better that we understand why we are doing it. Panati Pata is, Pana means killing or removal of life. Pata is cutting. Okay, so cutting the life. Why shouldn't I cut life? That's the question. I shouldn't cut life because I am also a living being, and the same thing would happen. Whether I did it of ignorance or not, it's going to happen the same way. Veramani means entertaining. So I learn for the whole day not to kill any living beings, or not to cut life from any living being. Because consciousness is consciousness. That which becomes aware is consciousness. So whether it is my consciousness or somebody's consciousness, is the same. Then the second one is Adinnadana, which means dinna is giving, adinna means not giving. So it's about not giving anything. Okay. So instead of not giving, I take it. Adana is not giving. Dana is to give. Adinnadana is a person who would not like to give, but instead take. So that I will not do. The third one is Abrahmacharya. Instead of Kameshu Michachara, what it really means is, now you should know Brahma doesn't mean a god Brahma or something like that. It's a state of the mind.
So, brahmacharya is to reside in a Brahma Vihara. That is, Vihara is to stay. So, there are 4 Viharas. That is Metta or Maitri, that is loving kindness, Karuna, compassion, Mudita, appreciative joy, and Upekha, equanimity. For that, one should not waste the energy. And sexual energy is the highest of the energy. So, today I will be a celibate. Whether it's a male or a female, doesn't matter. So, these are the 3 things done by the body, through the body. Then, speech, musavada. This includes the remaining 3 as well. That means telling lies, will incite to slander. That is pisuna. And that helps in harsh speech, harusa, and also helps in increasing sampapalapa, which is nonsense, frivolous talks. So today I will not be doing any one of those. No lying, no backbiting, no harsh speech, and not talking any nonsense on any subject. Then we come to the next one, which is Sura Meraya Majjapamadatthana. Sura as in liquor. Meraya is intoxication items like drugs. Majja is feeling high or intoxicated due to position or something. Pamada is heedlessness, carelessness. You will not be doing today. Then we come to the next section, which we don't generally do in a normal circumstances, is about Nacha, Gita, Vadita, Sukha. What it really means is that Nacha in the current context is about going to the clubs or sensual dance, watching videos, TikTok or Facebook or whatever it is. Gita as in romantic songs or enjoyment songs or whatever it is. Vadita is loud, stimulating background music, having headphones all the day. Visukha Dasana. People see comedy shows, news, reels, etc., which incite sensuality, sarcasm, mala, overuse of accessories and attention seeking desires or attires. Gandha, decorants, can be facial decorant or a bodily decorant. Vilepana is makeup, heavy makeup, fairness cream, filters, etc. Dharana is having expensive things just for showing it off. Mandana is asking for how am I looking, and Vibhushana is showing off, creating surgeries, filters, flaunting beauty, etc. So this is the modern day we can apply what was applied earlier in the old days of the Buddha. And the next one we are going to do is
in terms of sleeping. Uchchashayanam, Mahashayanam, Pahaya, Pativirata, Nityashayanam, Kappanti, Manche. So anywhere I'm going to sleep, I'm going to ensure that it's not high-rise bed or luxurious bed, and I refrain from all kind of enjoyment, because sleeping is rest, not about enjoyment. That's the whole purpose of doing it. So the high-rise bed would only make it feel sensual about it. So all of this, we are doing it to cut sensuality. And the last one we are going to do is eat in moderation, only when hungry, and not to eat in the night. Vikala bhojana, and not eating in the night. Okay, so in the Uposatha Sutta, it talks about Eka Bhaktika, that is one full meal, and that is morning you can have breakfast, but then you can have one full meal. And if you are feeling hungry later, or you have medical reason, you can eat little so that you don't have any pain. So these are the precepts we are going to have. Let me do that in Hindi. पानातिपात वेरमणि, हम किसी का प्राण हत्या नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी जीवी हो. अदिन्नदान वेरमणि, तो चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि दान करना चाहिए, इसके बदले में चोरी करना सही नहीं होता है. फिर अब्रह्मचर्य नहीं करेंगे. ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि जो 4 ब्रह्म विहार तक ले जा सके, और आज के दिन मिथुन या मैथुन जो करते हैं उससे हानि पहुंचती है, इस चीज के लिए, इसलिए नहीं करेंगे. ये 3 काय से हो गया. फिर मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसावाच, संपफलाप, ये 4 आज के दिन नहीं करेंगे, क्योंकि मूसावाद से पिसुनावाच, फरुसावाच, संपफलाप भी होता है. फिर सुरा मेरे मज्जपमादठान, कोई भी नशीली दवा, नशीली पदार्थ, या जो हमें यशस कुछ मिला है, इसके बारे में ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे हमें मद आ जाए, मतलब बहक जाए. फिर रात में सोने के लिए मंच या नीचे इस्तेमाल करेंगे. फिर खाना एक ही बार खाएंगे, पूरा खाना एक बार सवेरे भोजन ले सकते हैं, इसको ब्रेकफास्ट कहते हैं, पर रात में कुछ नहीं खाएंगे. अगर किसी को मेडिकल रीज़न है वो खा सकते हैं, पर जो स्वस्थ है वो आज के दिन ना खाए. फिर नाच गाना वगैरह नहीं करेंगे, और देह का सौंदर्य बढ़ाने के लिए ऐसे वैसे काम नहीं करेंगे. और आज के दिन पूरी श्रद्धा से ये 8 सील का पालन करेंगे. तो ये सील का हो गया, और हम क्यों कर रहे हैं उसका हो गया. So what we have understood right now is the aspect of why you are doing something, and about the 8 precepts. Now we will understand what is Buddha Dhamma Sangha.
This one, if I try to explain again back in English, in Hindi, it will take much time. So I'll try to explain this in English. And we had earlier done the same thing in Hindi many times, so people are used to it. So, number one aspect of Buddha. Iti piso bhagava arham samma sambuddho vijja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava iti. Now this defines what is Buddha. So if somebody were to ask what is Buddha, this is the definition of the Buddha. The Bhagava is Arham, one who has removed the enemies. Samma Sambuddho, one he is known for himself. Vijja Charana Sampanno, there are 15 Vijjas and 6 Vijjas and 15 Charana Dhamma. Sugato Lokavidu, by following you will be transformed or traveling towards Sugati, a good destination. For whom? Anuttaro Purisa Dhamma Sarati. That means he's like a charioteer taking Satta Deva Manusanam, any being, and Manusa as in the humans, and Deva as in the Deva. Buddho Bhagava iti. This is what is meant by Buddha and Bhagava. And what is Dhamma? Swakhato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ihipasiko Upanaiko Pachatam Veditabbo Vinyuhi iti. It means that Swakhato Bhagavata Dhammo, Dhamma is self-revealing. So let's take an example. If I am angry, let's say, or upset, I can have pain in the body, physical pain, and I can immediately have mental pain. And it fires up, it flares up. We can see that it instantly gives you the result. In the same way, if I have metta, that means loving kindness, the body pain is gone and the mental pain is also gone. So it's not about some kind of ritualism or blind faith. We can see it instantly. So the Dhamma, what Buddha teaches, is about suffering. So if there is birth, every day goes away. So every day going away is, let's say, 1 month, and every 1 month will become 1 year, and every 1 year we keep on adding. You know how much candle has got burnt. So there's nothing to say that I don't believe. You can see it every day. So the Dhamma is self-revealing. So if there is birth, there is going to be death. The only uncertainty is when. And we pray God or pray anyone not to die. But everyone has to die. That is self-revealing. That's the Dhamma. That's the nature of everything. So the first thing is Swakhato Bhagavata Dhammo Sanditiko. This will change the viewpoint. Because now we are seeing the suffering, the dukkha satcha. So why we are born and dying is because of tanha, craving for living.
can be kama tanha, sensual, bhava tanha, I want to become this or that, vibhava tanha, I don't want to become that. So these are the craving which creates existence. So Sanditthiko is about understanding why we take birth, or any being takes birth in any realm of existence, from animals to birds to insects to deva to brahma, or whatever category of beings are there, they all have the same nature. Akaliko, kala is time, so it is timeless. From the beginning of the world cycle, birth and death are the same. Anything that is born will perish. Any house that is constructed, no matter how strong it is, it's going to get demolished. It will break. Any tree that is growing will wither and die. Any plant will wither and die every day. In the same way, our hairs turns gray and our body keeps on changing every day. So it's not the same. So it is timeless as far as Dhamma is, since we can see it. Akaliko, ihipasiko, come and see. It's not about just believing for the sake of believing. You can see it. Opanaiko, you can investigate. Investigate the causes. So there is the first noble truth, the suffering itself. The second noble truth, the cause of suffering. The third noble truth is about how do you come out of suffering. The fourth noble truth is the steps taken to come out of suffering. Pachattam veditabbo vinyuhi iti. Each person has to experience by himself or herself. That means the Four Noble Truths have to be understood by each individually. So हम बुद्ध को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बुद्ध का एक गुण होता है जो आपको पता है कि इतिपिसो भगवा अर्हम, वो अर्हत है, मतलब जिन्होंने कोई भी दुश्मन जो थे उनको हटा दिया है, राग द्वेष मोह से बाहर हैं, अपने आप किया है सम्मा संबुद्धो, और उनके पास 6 विद्या है और 15 चरण धम्म है। सुगति अच्छे जगह पे लेके जाएंगे क्योंकि वो सारथी है देव, मनुष्य और सत्व के लिए, इसलिए उसको बुद्ध और भगवा कहते हैं। और धम्म का मतलब होता है कि स्वखा तो भगवता धम्मो, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो जल जाएगा, अगर किसी का मैत्री है तो खुशी में रहेगा, वो इसी वक्त आप देख सकते हैं, इसीलिए वो धम्म है, टीचिंग है जो सीखना है। संधिट्ठि को आपका दृष्टि चेंज हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर ये है तो ये होता है, अगर ये नहीं तो नहीं होता। अगर गुस्सा आता है तो पूरी बदन में, पूरी काय में या पूरे देह में जलन महसूस होती है। इसमें किसी भी अंधविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वयं हम देख सकते हैं कि हाँ ऐसा है। अगर हमें मैत्री भावना है, चाहे कितना भी कोई हमारे ऊपर गाली का बौछार करे, कुछ नहीं होता है क्योंकि उसका वो नेचर है। तो
बुद्ध धम्म ये है कि जो परिसर नेचर को बताता है, स्वभाव को बताता है कि इसका स्वभाव ये है, ये मत करो, इसका स्वभाव ये है, इसको करो। अगर हम सुख पाते हैं तो दुख को छोड़ना पड़ेगा, बस इतना ही है। इसीलिए दृष्टिकोण जो है, हम जिस नज़र से देखते हैं वो बदल जाता है। अकालिको, इसमें काल नहीं है, मतलब जो जनन दिया है वो मरण तो होगा ही उसका। ये जरा व्याधि इसके साथ में तो आता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये ही पस्सी को इधर ही देख लो, ओपन को खुल के इसके बारे में देखो। और हर जब भी हम ऐसा करेंगे तो चार आर्य सत्य को हम देख सकते हैं। फिर पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यूहिति के मतलब है हर एक को चार आर्य सत्य खुद जानना है, खुद एहसास करना है। तो संग का मतलब हम ये भी देखते हैं। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुग्गल एष भगवतो सावक संगो, आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलिकरणय्यो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं पुण्य लोकस्सा इति। इसका मतलब इतना ही है कि सु का मतलब है अच्छा, इसीलिए सुत्त जो कहते हैं, सु अत्त सुत्त, सु और दु, सुख दुख, सु पटी पन्न, अच्छाई की ओर, what that is good. Supatipanna is bound with goodness. Uju means easygoing or straightforward. So if somebody is saying Suju and Uju, it means good and straightforward. Who is non-manipulative. Samichi Patipanno is one who has right intentions, proper way of living. Nyaya Patipanno is one who is disciplined within himself. These are the four things. So the Sangha, that is people around with understanding this suffering, will be like this. Yadidam chattari purisa yugani. So four purisa yuga, the four yugas, and purisa means people or humans. Yuga. Yadidam, only when these four yugas come. Atthapurisa Puggala. There are 8 kind of individuals. One Sotapanna Anugami, one who is on the path of becoming Sotapanna, like a Saddhanusari and a Dhammanusari. One who is a Sotapanna, that means he has entered into the stream. And secondly, one who is a Sakadagami, once returner, so he is on the path of becoming once returner, Magga. And one who has got the phala or the fruit, which is Sakadagami. A third one is Anagami, same thing as path and fruit. And fourth one is Arhat
path and fruit. So these are the 8. Esa Bhagavato Savaka Sango. This is how the Sangha is made out of. And then when you find such people, Ahu Nayo, Pahu Nayo, Dakki Nayo, Anjali Karanayo, Anuttaram Punyakhettam Lokasa iti. That means you can be with them, you can learn from them, you can worship them, and you can also donate them. Okay, so this is the meaning of Buddha, Dhamma, and Sangha, and why we are doing something today. And now we come to the section of Uposatta. So you can do a meditation on Uposatta like I'm explaining now. While I also do, you can also do it together. The objective of Uposatta today, or any Uposatta, every 15 days there is a full moon and a new moon. Today is Purnima, and today is Buddha Purnima. That means one who found out the 4 noble truths and got liberated. So we also can take that characteristics for our own liberation from the samsara, which is birth and death. No matter how much we do whatever, death is the only reality. Meaning, we'll have to leave this body and go. There's no alternative. There is nothing anybody can do. तो अभी आपने देखा कि बुद्ध धम्म संघ किस लिए करते हैं. अभी हम उपोसत्थ का अभ्यास करेंगे, इसका ध्यान करेंगे. आप लोग इसका ध्यान करो और जैसे मैं करूँगा वैसे ही आप भी करो. और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है, और बुद्ध का मतलब जिन्होंने 4 आर्य सत्य ढूंढ निकाला, और आज पूर्णिमा है. इसका मतलब ये होता है कि मन को साफ कर सकते हैं आज के दिन. और जब भी हम इसका साफ करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. और ये दुख के जो सागर है, दुख का मतलब खाना पीने का दुख नहीं है. ये दुख का सागर है जन्म और मरण. जो कोई भी जन्म लेता है जहाँ पर भी, इसका मरण तो निश्चित है. कभी है पता नहीं. इसके लिए आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे. तो 5 उपोसत्त है. ब्रह्म उपोसत्त, धम्म उपोसत्त, सील उपोसत्त, संग उपोसत्त, सील उपोसत्त और देवता उपोसत्त. So there are 5 uposattas which we are going to do today. Brahma, Dhamma, Sangha, Sila and Devata. So let's come to the Brahma Uposatta. It's about understanding what we just now covered of Iti Piso Bhagava Araham. That is Brahma Uposatta. Now we need to know the meaning Brahma. What is Brahma? It's about the state of the mind, which is from Brah, means expand. So the first thing we need to have right now is Brahma Vihara. Number 1, Metta or Maitri, Karuna, Mudita, Vekha. So let's first start with Metta or Maitri. First thing you are going to do is remove the enmity from yourself.
That's the cause of the suffering. So just look at all the people in your life and don't have an enmity with them. तो अभी हम ब्रह्म उपोसत्य का प्रारंभ करेंगे। इसमें अभी हम मैत्री करेंगे। मैत्री भावना आपके संपर्क में जो कोई भी व्यक्ति है, उनके साथ आपके मन में वैरत्व या दुश्मनी ना हो। नज़दीकी लोग अगर है, जैसे पति या पत्नी या माँ-बाप, बच्चे, भाई-बहन या उनकी जो संतान है या उनकी जो परिवार है या आपका दोस्त है या कोई भी है, जिस व्यक्ति के साथ आपकी बनती नहीं है, उनको आप अपने आप को क्षमा करते हुए अपने मन से ये जो बैर है या दुश्मनी है, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो चुभता है आपको। अहम आवेरो होमी। So if you have anyone who is near and dear ones, as in wife, husband, children, parents, brothers, sisters, uncles, aunt, or friends, or neighbors, or anyone in your life with whom you don't like them, please bring them in front of you in your mind's eye and just release it by saying, Aham Avero Homi, I don't have any enmity towards you, and forgive them completely. Just let it go. Take 5 minutes to see each one of them and say goodbye to them in your mind. Not goodbye as in leaving them, goodbye as in letting go of the enmity towards them. आप अभी 5 मिनट इसके बारे में देखिए। जो कोई भी व्यक्ति आपको ठीक नहीं लग रहा है, उनको आपका मन से उतार दीजिए, क्षमा कर दीजिए, खुद को भी क्षमा कीजिए, उनको भी क्षमा कीजिए, और मन जब तक खुशी में ना बदल जाए, इन सारे लोगों को पकड़ के मत रखो, अपने मन से हटा दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ रहेंगे नहीं, आप रहेंगे उनके साथ। जैसे भाई है, बहन है, कोई भी है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, कोई भी रिश्ता है, उनसे आप मन से उनको द्वेष मत करो, उनको विदा करो अपने मन से, तो शांत हो जाएगा। As you let go of the enmity, you will start to feel relaxation in your heart. जैसे ही आप इनको छोड़ दोगे, आपके हृदय में या दिल में एक खुशी सी छाने लगती है। वो आप देखो। Please see this relaxed feeling that comes once you let go of any kind of enmity. Aham avero homi.
अभ्यपाजो होमि आनिगो होमि सुखी अतनाम परिहरामि। Abhyapaja is aversion. जैसे क्रोधित होते हैं, बुरा मानते हैं, उसको भी छोड़ दो। Drop all aversion, anger, spite, irritation, agitation. Just let it go. Nigha means prison. Anigha is free from prison. We are imprisoned by raga, dvesha, moha. Just let it go. For today, just let it go. निगाह का मतलब होता है कारागृह या जेल जो होता है, वैसे राग द्वेष मोह जो है ये हमें बंधित कर देता है, इसको भी छोड़ दीजिए। तो अभी आपको सुख आना चाहिए जो आर्य सुख है, मतलब जनन मरण से आगे जो सुख है इसका आप अनुभव करेंगे अगर आपने आवेरो होमी, अभ्यपाजो होमी, आनिगो होमी किया है सही तरह से। किसी के वस्तु के ऊपर, किसी के विषय के ऊपर, किसी के संबंधों के ऊपर आप राग द्वेष मोह ना करें। सब जीवी को प्यार करें, नफरत में ना रहेंगे तो इमीडिएटली अभी का अभी आपको सुख आ जाएगा। So when I let go of greed, hatred, delusion on any object, on any relationships, immediately you can have this sukha or happiness. Just check your mental feeling. You will be expanding. The mind starts to expand. And if you are doing it right, it is Brahma Vihara of Metta or Maitri. आपका मन फैलते जाएगा अगर आपने ये सही तरह से कर रहे हो तो आप ब्रह्म विहार में अभी मैत्री कायम कर दिया। अभी आप जितने भी आपके लोग हैं, सदस्य हैं, उनको ये दान कर दीजिए कि जैसे मैं खुशी में हूँ, जैसे मैं सुख में हूँ, वो भी वैसे ही सुख पाए। चाहे वो माता पिता है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे चाहे वो पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, कोई भी है। ये जो खुशी हो रही है, ये जो आपको सुख मिल रहा है, ये आप सारे लोगों को, इन लोगों को पहले दे दो, दान कर दो। Now if you're getting this happiness of metta, now you can pass it to all the people you know with whom you had
some kind of issues, may they also find this happiness as much as I'm finding now. Just pass it to them. If you have a wife and you have divorced her, if you have a husband and you have divorced him, if you have children and they are not there with you, if your husband is dead, if your wife is dead, your parents are dead, if your brothers and sisters are dead, if your children are dead, whoever is there or not there, just pass it. आपका अगर पति मरा है, पत्नी मरी है, या आप झगड़ा होके आप बिछड़ गए हो, या आपकी बेटा या बेटी नहीं है आपके साथ, वो चले गए हैं या उनका देहांत हो गया है, मरण हो गया है, सारे लोगों को ऐसा ही सुख पाए जैसे मैं सुखी हूँ, वैसे ही सबका हो। आप ये सही तरह से करोगे तो मन फैलते जाएगा, इतना खुशी, इतना सुख आ जाएगा कि पूरा भर जाएगा। If you are passing it to everyone, you know, and it keeps on increasing and keeps on increasing, you know that consciousness started to expand. And you can see it, your mind is expanding. The more you give, the more you expand. Just spread it all over. Then come to Karuna, which is compassion. Now be compassionate with everyone, because the happiness what you're getting now, many people have not got. So be compassionate to them. Let me not spoil their happiness. जो हमें सुख आ रहा है वो हम हर किसी के साथ करुणा में रहे, कि हम उनका जो सुख है उसका ना तोड़े, और जो सुख मेरा है वो सारे लोगों को आए। अगर कोई सुखी है जो मुझे पता है वो सोतापन्न है या सकदागामी है या अनागामी या अरहत है, उनका मंगल हो, जिन्होंने ये दुख सागर से बाहर आ गए। If you know someone who is a Sotapanna or a Sakadagami, Anagami, Arhat, just feel very happy that they have come out of the suffering of birth and death. Just make your heart feel expanded, and that would be mudita, appreciative joy, that they have come out of suffering. And of those people who don't want to do anything at all and they want to suffer, have an equanimity towards them, not indifference. Don't have to ignore them, but you be equanimous. जिन लोगों को
दुख से बाहर आना नहीं है, उन लोगों के साथ आप अलग से बर्ताव मत कीजिए। उपेक्षा में रहिए, मन को संतुलन बना के रहिए, समत्व में रहिए। ऐसे अगर हम करेंगे आज के दिन तो ये ब्रह्म उपोसत्त होता है पूरी दिन। तो हम कौन सा भी काम कर रहे हैं इसको देखना है कि हम ब्रह्म उपोसत्त में है कि नहीं। Now if you are going to stay in this way, you are doing Brahma Uposatta. So your mind keeps on expanding, not contracting. Even for a single minute, it will not contract. So keep on doing this for the entire day today. So now we come to the Dhamma Uposatta, like what we saw on the Swakhato Bhagavata Dhammo. So now if you're doing it proper on the Brahma Uposatta, you can see your mind is expanding and you're feeling happy. That means the Dhamma is working. अगर आपने ये ब्रह्म उपोसत्त सही कर रहे हो तो धम्म आपको समझ में आ गया कि अगर आपके मन निर्मल है तो आप खुशी पाएंगे, अगर मल में है, गंदगी भरी है तो दुखित हो जाएंगे। So if your mind is pure because of expansion, you will see happiness. However, if the mind is contracted for whatever reason, you will be suffering. So the Dhamma will show instantaneously. Doesn't take time. So please ensure that you don't bring in bad things in the mind, make it corrupted. Just let it go. Don't have any enmity, don't have any kind of anger, aversion, agitation, or anything at all with anyone or anything. Just feel loving kindness towards everyone for today. And the Dhamma will showcase for itself. तो धम्म इतना ही होता है कि जो हम अभी बीज उगाया है, जो मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा का, वो तुरंत आ जाता है। तो दुख से निवारण आप पा सकते हो जब भी आप जो पकड़ के बैठे हो उसको छोड़ दोगे तो। सारे जो घटना जो हुई है, जो बुरी है वगैरह है, आप उसको छोड़ दो। All those events which have made you feel irritated or anger or whatever, just let it go. Just let it go. Don't hold anything. You'll find the mind expanding, peaceful. Since we are all doing together, we are in Sangha, this togetherness. This is Sangha. Let this Sangha flourish
Let this Sangha expand. Let it reach many, many people and make their lives filled with happiness. So, this is the way of happiness by doing Brahma Vihara on Uposatta day. हम सारे लोग संग में हैं, आज हम बैठ के कर रहे हैं। ये जो खुशी और सुख मिल रहा है वो सारे लोगों को पास जाए, जितना फैल सकते हैं फैले ये, और सारे सुख पाए, दुख ना पाए, कोई ना तड़पे इस सुख के लिए जो हर दम अपने ही पास है। सिर्फ जो हम पकड़े हैं उसको छोड़ना बाकी है, अपने आप को दिखा देता है। So let's not hold on to unpleasantness. Just give up. Any unpleasantness, just give up. Just watch the in breath and out breath now. And see whether your mind is expanding or not. As the in breath goes into the nose or the nostril, like a gatekeeper, see it coming out, going in, coming out. No stress, just watch the breath going in, coming out. अपने सांस को देखते रहिए, जो अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे कोई गेटकीपर है वैसे अपने सांस को देखना है। अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है। इतनी खुशी आ जाएगी, इतनी सुख आ जाएगा। You will get joy and happiness if you are able to properly see the breath.
और हम लोग ये 8 सील को तोड़ेंगे नहीं जो हमने लिया है। पानातिपात, अदिन्नादान, कामेश मिच्छाचार के बदले में अब्रह्मचर्य, फिर मूसावाद, पिसुनवाच, फरुसवाच, संपफलाप, फिर सुरा मेरे मज्जपमादठान, नच्च गीत वादित सुख माल गंध विलेपन, धारण मंदन विभूषण, उच्च शयन महाशयन, एक भट्टिक विकाल भोजन। ये अगर हम पालन करेंगे तो ये 8 सील का उपोसत्य हो जाएगा। So let's follow these 8 precepts today and ensure that we are not breaking any one of them. And this would become eight precept uposatha. Then we do the Devata uposatha. So Devata have Saddha, Sila, Sutta, Chaga, Panya. Saddha is faith, Sila is morality, Sutta is they know the Dhamma, what we are doing now, we are seeing it for ourselves. If you hold it properly, you will not suffer. Chaga means giving up. So we gave up animosity, we gave up being angry, frustrated, agitated, etc. Panya, wisdom. तो देवता लोगों के पास ये 5 होता है, श्रद्धा, सील, सुत, जो धम्म जानते हैं कि क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं करने से क्या होता है। अभी हमने अपने नज़दीकी संबंधी या कोई भी मनुष्य, प्राणी वगैरह, उनको हमने गुस्सा होना, बुरा मानना वगैरह छोड़ दिया है। तो अभी हमारा मन में परिणाम देख रहे हैं कि अगर हम वो नहीं करेंगे तो खुशी रहेंगे, अगर वो करेंगे तो खुशी चला जाएगा। अपने आप देख सकते हैं जो हमने त्याग कर दिया है। जब भी मन ऐसा होता है तो पन्या में रहेगा, प्रज्ञा में रहेगा। तो ये 5 देवता के पास होते हैं। तो इनके चित्त में ऐसा रहता है तो पसीदती,
खुशी होने लगता है, पामोज प्रसन्न चित्त होके एक खुशी से रहेंगे। और ये क्लेश जो है, क्लेश, उपक्लेश, जो नजदीक से क्लेश है वो निकल जाएगा। तो हम भी आज के दिन ऐसा ही करेंगे। जितने भी देवता यहाँ पे उपोसत्त सुत्त में लिखा है, मैं एक एक करके जाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा उसका। तो जितने भी उपोसत्त के सुत्त में लिखा है देवता, आप एक बार पढ़ लीजिए। आप वैसे ही कीजिए जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो आप ऐसे ही करते रहोगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि देवता कैसे होते हैं। ये आपके मन के अंदर ही प्रकट हो जाएगा। Now keep on doing this 5, knowing this 5, Saddha, Sila, Sutta, Chaga, Panya. There are different Devata realms, God realms. I don't want to go through each one of them. It is going to take extensive time. But I suggest each one of you to go through this sutta, Uposatta Sutta, to know how you can be a God by what to practice. We have been practicing it. You're seeing it right now, how the mind expands. If you can keep it properly, you can know for yourself how the gods are going to be. So these are the 5 Uposatta: Brahma, Dhamma, Sangha, Sila, Devata. पानं न हन्येन चदिन्नमादि मूसा न भासेन च मज्जपोषिया अब्रह्मचर्या विरामेयमेत्तुना रत्तिं न भुञ्जेय विकालभोजनम्। मालां न धारेण च गन्धमाचरे मञ्चे च मायं मञ्चे च मायं वसयेत् सन्तते एतन्हि अट्टङ्गिकम् उपोसत्तम् बुद्धेन दुःखन्तगुणापकाशितम्
चंदो च सूर्यो च उभो सुदर्शना उभासयम् अनुपर्यन्ति यावता तमोनुदाते पन अन्तलिखग्गा नाभेपभासन्ति दिशा विरोचना एतस्मिं यं विज्जति अन्तरे धानम् मुत्तामणिविलर्यञ्च भद्दकम् सिङ्गी सुवर्णम् अथवापि काञ्चनम् यं जातरूपं हटकन्ति उच्यति अट्ठङ्गुपेतस्य उपोसत्था कालं पितेनानुभवन्ति सोळासिम् छन्दप्पभातारागणा च सब्बे तस्मा हि नारी च नारो च शीलवा अट्टङ्गुपेतम् उपवसुपोसत्थम् पुण्यानि कत्वान सुखद्रायिणी अनिन्दिता सग्गमुपेन्ति धानम् इति. The meaning of this is, one should not kill any living being, nor should one take what is not given. One should not speak falsely nor indulge in intoxicants. One should refrain from unchastity and abstain from sexual relationships for today. One should not eat at improper times when what not is hungry and in the night. One should not wear garlands or apply perfumes to show off. One should sleep on a simple bed or a mat or a floor. These 8 factors are the uposatta taught by the Buddha to end the suffering. Just like the moon and sun, both which are very beautiful, shine and move through the sky as far as they can reach, dispelling the darkness as they travel through space, illuminating in all directions. Of all the wealth found between them, because they are there, that means sun and the moon, we can see these pearls, we can see gems, sapphires, precious stones, coral, gold, and other valuable jewels, which are termed as hatakanti, which means the purest form, as in yellow metal is gold. Even these do not equal a fraction of the merit gained by observing the uposatta with these 8 factors. Just like the radiance of the moon and stars is all incomparable. Therefore, each man and woman of good conduct should observe the uposatta with these 8 factors without breaking a single of them. Having created merit, they enjoy the happiness in this life and the future to come. And being blameless, they'll attain heavenly realms. किसी भी जीव राशि को
आज के दिन बद्ध मत कीजिए, ना ही बिना अनुमति के कुछ लेने की कोशिश कीजिए। झूठ नहीं बोलिए और न ही नशा करने के लिए उत्साहित हो जाइए। आज के दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। इसका मतलब है मैथुन वर्जित है और गलत समय जब भी भूख ना लगे तो ना खाए और रात की भोजन ना करे। और आज के दिन ऐसा बन ढन के ऐसा एक कोई प्रदर्शन के लिए या प्रदर्शन करने के लिए कपड़े या वगैरह ना पहने, सरल में रहे और साधारण बिस्तर का फर्श पर सो जाइए। ये 8 तत्व उपोसत जो बुद्ध ने बताया है, वो दुख को अंत कर सकता है। जैसे चांद और सूरज दोनों सुंदर है, वो आकाश में जहां तक पहुंच सकते हैं, वहां तक चलते और चलते अंधकार को मिटा देते हैं। जब भी वो अंधकार को मिटाते हैं, तभी हमें ये सारा मणि, सोना, नीलम और अन्य कीमती मूल्यांकन करने वाला चीज मिल जाती है। पर अगर हम ये मूल्यांकन करें उपोसत्य का और इसका, ये तुलने में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ पत्थर है। और ये जो अभी हम कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इसीलिए आज के दिन महिला हो या पुरुष हो, इस 8 उपोसत्य को बिना टूटे पालन कीजिए। 8 सील का उपोसत्य जब भी आप ऐसे पालन करेंगे, तो इस जन्म में इस दिन आप सुखी तो होंगे ही, आगे भी ऐसे ही होगा। और यही मार्ग है जो ब्रह्म या देवता के समक्ष में रहने का और मन वहां स्थित होने का। एवं मे सुतम् एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति चेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे। अथ को अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रत्या अभिकन्तवन्ना केवलकप्पं चेतवनम् ओभासित्वा येन भगवा तेनुपसङ्गमे। उपसङ्गमित्वा भगवन्तम् अभिवादित्वा एकमन्तम् अट्ठासि। एकमन्तं थिटाको सा देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभासि।
बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयुम् आखङ्कमानासोत्तानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानं पण्डितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानम् एतं मङ्गलमुत्तमम् पटिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता अत्तसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुसज्जं च सिप्पं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् मातापितु पट्ठानं पुत्तदारस्य सङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गहो अनवज्यानि कम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरतिविरति पापा मज्जपानं च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कतन्युता कालेन धम्मसवनम् एतं मङ्गलमुत्तमम् खन्ति चोच्च सोवचस्सता समनानन्ददर्शनम् कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसच्चानदर्शनम् निब्बानसच्चिकिर्या च एतं मङ्गलमुत्तमम् पुट्ठस्य लोकधम्मेः चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं क्षेमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कत्वान् सब्बन्तमपराजिता सब्बन्तसोत्ति गच्छन्ति तम् तेषां मङ्गलमुत्तमम्। आज उपोषित के दिन में सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सबका दुख निवारण हो। Today being the Uposatta day, may all of you be free from suffering. May all of you be happy. May all of you be in bliss for the entire day. May the day of yours, or night, or afternoon, whichever part of the world you are from, be filled with happiness. Sadhu, sadhu, sadhu. Have a good day.